Good morning, my dear children. How are you? I'm Shivani, your English teacher. Children, in last class, we read that Nelson Mandela was appointed the first black president. He took a vow, and people over there sang two national anthems. You remember? Now, see the next part. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. Few difficult words are here, children. The meaning of patched is repair, and erected means raised. So he says, on that day, I was thinking about the history, about the past. He became emotional. He says, after the Anglo-Boer War, whites started creating a difference with the blacks. एंड दे क्रिएटेड ए सिस्टम. उन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया था, सिस्टम ऑफ डोमिनेशन बिल्ड कर लिया था, जिसमें वाइट्स ब्लैक के ऊपर डोमिनेंट रहते थे, उनके ऊपर हावी रहते थे, उनसे सब काम कराते थे अपने अकॉर्डिंग. तो बिफोर हिज बर्थ वाइट्स बिल्ड अ हार्श एंड इनह्यूमन सोसाइटी. ही सेज नाउ इन द लास्ट डिकेड of the century means around 1991 to 2000. Actually, he is thinking about 1994. 1994 comes in between 91 and 2000. So he is talking about that particular day when he was appointed as the first black president. Which year? 1994. Yes. So this system started in the same century. और अब उसी सेंचुरी की ख़त्म होते होते अब ये सिस्टम भी ख़त्म ही होने वाला था. विच सिस्टम ऑफ अपार्थाइड. सो दिस सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद इक्वालिटी. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The meaning of wrought is to make yourself work very hard. So now he says, all this is the result of the sacrifices of thousands of people, their courage, which cannot be repaid. वो उन लोगों के भी आभारी हैं, उनके लिए भी फील करते हैं कि जो अब इस वर्ल्ड में है ही नहीं. एक्चुअली दोज पीपल कंट्रीब्यूटेड अलॉट इन दिस मैटर. उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें, इस स्ट्रगल में. ही सेज कि उनकी सफरिंग्स, कंट्रीब्यूशन, योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. ही इज़ ऑल्सो फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कुडंट से थैंक्स टू दोज ग्रेट पीपल. वो उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहते थे, उनके आभारी थे, उनको धन्यवाद करना चाहते थे, बट ही कुडंट बिकॉज दीज पीपल वर नॉट अलाइव इन द वर्ल्ड नाउ. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years
if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislers, the Chief Luthilius, the Yusuf Dadu, the Bram Fisher, the Robert Zubukvis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Children, the meaning of profound is deep. Unintended is called not planned. So now he says that this system of apartheid has left a wound on the spirits of the people, a wound which can never be healed. जैसे एक ऐसी चोट, एक ऐसा घाव जिसको कभी भरा नहीं जा सकता, जो हमेशा रहने वाला है बॉडी पर। बिल्कुल इसी तरह से ये जो अपार्थीड का द सिस्टम ऑफ अपार्थीड वाज आल्सो लाइक दिस, इसने उनकी आत्माओं पर, उनकी सोल पर इस तरह का वोंड क्रिएट कर दिया था जो अब कभी जल्दी से भरने वाला नहीं था एटलीस्ट। तो ही फर्दर सेज कि इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ और भी हुई कि विद दिस पीपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एमर्ज्ड एज ऑलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिजलस, चीफ लथली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवे। तो ही सेज कि ये वो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में अपना नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखवा दिया था। These were the great people. You can see the picture here. The picture of these people have been given here. These were the 6 people here. So he says that these people will always be alive in the heart of the black Africans. And what was the reason? Because they contributed a lot, because these people contributed a lot to produce these people. Oppression, discrimination is needed. Here he compares these people with the gems. Means he says in real these people are the gems of the country. यानी कि ये लोग साउथ अफ्रीका के प्रेसियस स्टोन्स की तरह हैं। प्रेसियस स्टोन्स मीन्स बहुमूल्य रत्न, एज डायमंड एंड एमरॉल्ड। एज यू नो दैट अफ्रीका इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। तो वो इन लोगों को भी दे डोंट थिंक दैट दीज पीपल आर लेस दैन दोज प्रेशियस स्टोन्स। इन रियल सेंस these are the actual precious stones of South Africa. He wants to say this. Now see, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. The meaning of resilience is the ability to deal with the hardships, and defied is to refuse to obey something or somebody. The meaning of conquer is to win. So now he says, now he wants to say that he gives this credit to his comrades. These people were with Mandela in this fight. He says that I have learned so much from them. I have learned the meaning of courage from them.
वन हु डजेंट हैव फियर इज़ नॉट करेजियस। वो कहना चाहते हैं कि द पर्सन हु डजेंट हैव फियर इज़ नॉट करेजियस बट हु हैज़ ट्रिम्प ओवर द फियर इज़ करेजियस इन एक्चुअल। तो जो डरता नहीं है, जिसके अंदर डर नहीं है, वो करेजियस नहीं है। जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली, in actual sense, in real sense, that person is courageous. So to be courageous, we need a triumph over fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love also. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity even in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Grimmest means hard, and the meaning of glimmer is shine. So now he tells that nobody is born with hatred. कोई भी पर्सन अपने साथ हेटेड, नफरत को लेकर पैदा नहीं होता. एंड इफ़ अ पर्सन कैन लर्न टू हेट देन ही कैन ऑल्सो लर्न टू लव. अगर कोई इंसान नफरत करना सीख सकता है, इस भावना को सीख सकता है, अपने अंदर पैदा कर सकता है, देन ही कैन लर्न ऑल्सो द फीलिंग ऑफ लव, हाउ टू क्रिएट लव. नाउ ही इज़ मिसिंग द टाइम व्हेन ही वाज इन जेल. अब वो उस टाइम को मिस कर रहे हैं जब वो जेल में थे. If you remember children, I told you in the very starting of the chapter when we started this chapter that he had to spend 30 years in prison. उनको 30 साल अपनी लाइफ के प्रिजन में बिताने पड़े थे ड्यू टू दिस फाइट, क्योंकि बिकॉज ही वॉज डूइंग दिस स्ट्रगल, क्योंकि वो ये स्ट्रगल कर रहे थे. ही सेज दैट वी वर ब्रूटलाइज्ड, टॉर्चर्ड बैडली. उनको ब्रूटलाइज किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था बहुत बुरी तरीके से. इवन ह्यूमैनिटी ऑफ एनी गार्ड वाज इनफ फॉर हिम. बट वो ये भी कहते हैं कि एक गार्ड की ह्यूमैनिटी, उसकी काइंड हार्टेडनेस, दैट वाज इनफ फॉर हिम एंड दैट थिंग गेव हिम अ स्ट्रेंथ टू टॉलरेट ऑल दो सफरिंग्स एंड टॉर्चर्स. यानी एक गार्ड की इंसानियत भी उन्हें एक सपोर्ट देती थी, एक दिलासा देती थी दैट ही कैन टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स, ही कैन टॉलरेट ऑल दिस इन ह्यूमन ट्रीटमेंट. ही सेज द गुडनेस ऑफ पीपल इज़ अ फ्लेम विच कैन बी हिडन बट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड. मीन्स वो कहते हैं कि अच्छाई की आग को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है. वो कम हो सकती है, वो दबी रह सकती है, बट दैट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड. उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता है. वो जो अच्छा इंसान है, जो इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी किसी के अगर अंदर है तो वो रहेगी, वो रहने ही वाली है. उस ह्यूमैनिटी को, उस काइंड हार्टेडनेस को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है.